everyone. Today we are here with our 13th webinar series of Amrit Mehsana Startup and Innovation Mission. आप सबकी रिक्वेस्ट के हिसाब से हम आज भी सिर्फ हिंदी में ही बात करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर प्राची पांडे मैम है, जो हमारे साथ इंटेलेक्चुअल राइट्स के बारे में बात करेंगे। यूजुअली आप लोगों को एक क्वेश्चंस होते हैं कि हम अगर पेटेंट फाइल करते हैं या हम कुछ न्यू लाते हैं तो क्या क्या राइट्स है हमारे पास और कैसे कैसे हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको जनरली होते हैं और हमने हमेशा ये क्वेश्चन के आंसर्स देने की कोशिश की है। तो आज ये सेशन में हमने प्राची मैम को बुलाया है आपके यही क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। मैम का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी आपको, ताकि आपको मैम का थोड़ा सा बैकग्राउंड पता पड़े और आपको ये भी पता पड़े कि आप कौन से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं उनसे। मैम ने बी फार्म किया है, फिर एम फार्म किया है। मैम का पीएचडी भी फार्मेसी में है। उसके अलावा मैम ने एमबीए भी किया है। तो मैम की जर्नी जो है एक रोलर कोस्टर राइड के जैसी रही है। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जॉब किया है। उसके बाद मैम प्रमोट होके एसोसिएट प्रोफेसर भी है अभी। उसके साथ साथ मैम डिप्टी डायरेक्टर भी है केपीजीयू वडोदरा में। तो एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड वाली जर्नी और ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी वाले मैम हमारे साथ आज प्रेजेंट है। तो प्लीज आप ये वेबिनार का लाभ उठाएं और जो भी क्वेश्चंस हो वो चैट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा और मैम आपके आंसर्स देगी। लास्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रखेंगे और अभी हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। Thank you so much, ma'am, for coming. Over to you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your kind words. And a very good evening to the innovators of Gujarat. मैं भी कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम हिंदी का यूज करके आपको समझाने की कोशिश करूं, बट जहाँ पे कुछ पेटेंट के टर्म्स आते हैं where we can talk in English, so we can definitely like pursue with that. So we are the proud Indians who are proceeding towards in the direction of Atmanirbhar Bharat. And we all are doing some innovations and also protecting our intellectual property rights. And we are also proceeding towards development of our startups. So yes, today we have gathered here to discuss about innovation and intellectual property rights for startups. So I'm just sharing my screen to all of you, and I would be very happy to answer your questions. You can drop your questions in chat box, or you can even ask me any question in between. May I know, is my screen visible? Yes, ma'am, it is visible. Your screen is visible. Okay, fine. So today we will talk about... sorry to interrupt. We can just turn on the slideshow mode. That's it. Okay, just a minute. Is it okay? Yes, ma'am. We are good to go. Thank you. Okay, thank you. So let's talk about innovation and intellectual property rights. So every institution in Gujarat, every college, every university has lots of innovators who are working towards innovation. तो हम सब कहीं ना कुछ innovate कर रहे हैं. Even in our daily life, we find some problem statements, hackathons, बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशंस, बहुत सारे ऐसे एक्सपोजर्स हैं जहाँ हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलते हैं. एंड एवरी वन ऑफ अस हैज अ इनोवेटर इनसाइड अस. सो वी आर डूइंग सम इनोवेशंस इन आवर डेली लाइफ, सम वेरी फ्रूगल, वेरी ग्रास रूट इनोवेशंस, सम वेरी टेक ड्रिवन इनोवेशन, बट एवरीवेयर the protection of innovation by intellectual property rights, somewhere it is mandatory. Then only we can convert our innovation into a startup in such a way that we can have a monopoly rights over our innovation for a period of 20 years in terms of patents. So let's start about it. What are the benefits? What are the schemes? How we can proceed towards it? So first of all, I would like to mention the Startup India Initiative 2016. What are the patent benefits for startup? We all must know that इंडियन गवर्नमेंट ने पेटेंट फाइलिंग के लिए 80% की रिबेट रखी है फॉर इंडिविजुअल्स, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस. इफ वी आर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन अवेल द सेम बेनिफिट एज अ नेचुरल पर्सन और एज अ इनोवेटर.
So just see companies who are paying 8,000, only 1,600 is needed for a natural innovator or educational organization or startup. Once we file our patent, the next point comes is the publication of patent on the site of Indian Patent Office and in the Indian Patent Journal. That is the first step towards the prosecution of patent. For that, the form number is 9 and fees are 2,500. That is again very less as compared to companies who are paying far more. After publication of patent, what happens? It must be examined. जैसे एग्जामिनेशन होती है ना, बिना एग्जामिनेशन पास किए हुए हमें कभी मार्क्स नहीं मिलते. The same way, patent has to be examined, prosecuted, and there is also a provision of faster examination. But faster examination के लिए कौन eligible है? Normal individuals? Naturally not. One female innovator must be there in the team of individuals to get the benefit of faster examination. That is a must. So whenever we form a team, just take care that one female innovator must be there. Then you will be eligible for faster examination at a reduced fee. Fees are 8,000 only. Form number is form 18A. And this process gets completed within 105 days. So अभी वो जमाना गया जब हम बातें करते थे कि पेटेंट मिलने में तो सालों लग जाते हैं. ऐसा नहीं होता है. आप देखिए, आप आज आपने पेटेंट फाइल करी, उसके बाद आपने अर्ली पब्लिकेशन की फॉर्म फिल करी, फॉर्म 9, और विद इन अ वीक और मैक्सिमम 15 डेज आपकी पेटेंट ऑफिस की जर्नल में आ जाती है. एग्जामिनेशन कराने के लिए पेटेंट का पब्लिश होना इंपॉर्टेंट है. सो एक बार पेटेंट पब्लिश हो गई तभी आप एग्जामिनेशन करवा सकते हैं. अब एग्जामिनेशन भी फास्ट करवानी है, उस केस में एक फीमेल एप्लीकेंट होना जरूरी है अगर आप एक नेचुरल इंडिविजुअल हो. और सपोज इफ यू आर ए स्टार्टअप, you are eligible, or important is that for that like for startup, I know the definition of startup. I'm coming to that part also. So startups are eligible, then your individual persons with female applicants are eligible. So this is important for especially for us. Another important thing, sometimes क्या होता है कि हम innovation भी करते हैं, then we pay all the fees. At the time of prosecution before the grant, we realize कि it's not good, somewhere I'm not up to the mark, and I have एक hitch होती है mind में कि ये grant नहीं होगा और इसके पैसे waste भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर patent refuse हो जाता है तो फिर आपको वो money या fees आपकी वापस नहीं होती है. So suppose अगर आपको ऐसा feel होता है कि नहीं ये patent मुझे आगे prosecute नहीं करना है, so in that case there is a refund of 90% of fees. But for startup, for individuals only, not for companies. So 90% की रिफंड का प्रोसेस है. और फिर एक और चीज है जो पेटेंट ऑफिस नहीं प्रोवाइड करता है बट इंडियन गवर्नमेंट देती है, दैट इज टैक्स एग्जाम्पशन फॉर 3 years. दैट इज अगेन अ बिग बेनिफिट फॉर स्टार्टअप्स. तो जो भी स्टार्टअप्स हैं, आई थिंक सभी ने फॉर्म 80 IAC अप्लाई करा होगा, बिकॉज थ्रू विच आपको टैक्स एग्जाम्पशन मिल जाती है. वो भी startupindia.gov.in के पोर्टल पर अवेलेबल है. आप टैक्स एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंजल इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके लिए भी फॉर्म्स हैं, उसके लिए भी एप्लीकेशन करी जा सकती है. अब हम बात करते हैं स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की, जो एक इंडियन गवर्नमेंट की मार्वेलस स्कीम, आई कैन नेम इट एज, एंड यू कैन फाइंड द डिटेल्स ऑन दिस URL. So what is there? Scheme facilitate the startup in filing and processing of their patent, design or trademark through assistance of IP facilitator. So just for information, I am a DIPP IP facilitator who can from Gujarat, who can really help all the startups, especially for my organization. Actually, there are so many patent filers and who are just going through the grant process. That become a really great resource. And you know, there are lot many IP facilitators who you can find the list on this particular site of like Controller General of Patent Design and Trademark. So ये इसकी पर्पस क्या है SIPP की? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को के लिए फोकस्ड है. लाइक द पर्पस इज टू इनकरेज द पेटेंट फाइलिंग एंड प्रोसिक्यूशन, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशंस, and also it guides the emerging technologies among startups and aid them to commercialize them.
देखिए बात ये आती है कि हम पेटेंट कर भी लेते हैं, ग्रांट भी हो जाती है, उसके बाद का क्या है? आईपी कॉमर्शियलाइजेशन इज सच अ बिग थिंग दैट इज एक्चुअली आई कैन से इट्स इक्विवेलेंट टू अ स्टार्टअप. So IP commercialization, licensing of IP, that is must. Because मैं अभी आपको बताऊंगी पेटेंट मिलने के बाद की प्रोसेस एक्चुअली ज्यादा टफ होती है. सो आई विल गिव अ ब्रीफ इनसाइट. एक बार ये पूरी प्रेजेंटेशन हो जाती है उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट दूंगी अबाउट आईपी कॉमर्शियलाइजेशन, राइट? सो अभी देखते हैं कि अब SIPP स्कीम में कौन एलिजिबल होता है. स्टार्टअप जो इंडिया में रजिस्टर हुआ है एंड दैट has not expired more than 7 years before the application of SIPP. Company shall cease to be a startup if turnover of early financial year is more than 25 crores or completed 7 years from the registration date. तो 7 सालों के अंदर और जब तक आपकी टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं हो जाती है SIPP के लिए एलिजिबिलिटी रहती है. और ये स्टार्टअप की तो डेफिनेशन ही है. स्टार्टअप मस्ट वर्क टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, कमर्शियलाइजेशन और इनोवेशन ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस और सर्विस व्हिच आर ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी. सो जब भी हम कोई इनोवेशन करें तो आई थिंक वी शुड ऑलवेज इन आवर माइंड दैट वी शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स सम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सम इनोवेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस. Then only we can be very unique, we can compete in market, and we can really contribute towards Atmanirbhar Bharat, because then only India can become a very distinguished country in the world in terms of innovation. So that is very important, that technical advancements कितनी add कर सकते हैं. हम जो भी अपनी रोजमर्रा की चीजों से एक्सपोज होते हैं उसमें हमें क्या प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, हम उसमें कौन सी टेक्निकल इनोवेटिव फीचर्स ऐड कर सकते हैं कि वो बहुत यूनिक हो जाए. और यस उसमें प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं होता है, बिकॉज वी इंडियंस बिलीव इन लेसर प्राइस एंड मोर वैल्यू. सो ये पॉइंट हमेशा रखना है, बिकॉज नॉट ओनली फॉर इंडियंस, वी कैन इवन प्रोवाइड इट टू द वर्ल्ड एट अ लेसर प्राइस. व्हाई टू स्पेंड मोर? Another, startup shall be entitled of getting the benefit of this scheme after it has procured certification from the startup certification board. So a recognized startup honi chahiye, DIPP recognized startup. The process is also very simple by the government of India. Every startup can be DIPP recognized if such conditions are fulfilled. और एक और इसकी रिक्विजिट है कि कंपनी इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. तो कोई स्प्लिट करके बनी हुई कंपनी नहीं होनी चाहिए. स्टार्टअप कंपनी ऐसी नहीं होती है, दैट्स व्हाई. अब SIPP स्कीम के बाद एक बात और आपको ये मैं बताना चाहूंगी, इसकी पूरी कॉस्ट पेटेंट की ये खुद पेटेंट ऑफिस बेयर करता है. आई एम कमिंग बैक टू द दिस स्लाइड. इज लाइक दिस इज असिस्टेंस वेयर फीस इज बॉर्न बाय द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स. तो कहीं पे कुछ पे नहीं करना होता है आपको. स्टार्टअप जो भी फैसिलिटेटर की फी होती है, जो भी कुछ होता है वो पेटेंट ऑफिस बेयर करता है एंड यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. कमिंग टुवर्ड्स इनोवेशन. इनोवेशन में करना क्या है एग्जैक्टली? अभी देखिए कोई भी इन्वेंशन जो हम करते हैं लाइफ में, जरूरी नहीं कि उसकी कॉमर्शियल पर्पस होती है. कभी कभी कुछ फैक्ट फाइंडिंग भी एक इनोवेशन होता है, एक न्यू कंपाउंड का सिंथेसिस भी इनोवेशन होता है. बट देयर आर सम क्वेश्चंस अबाउट इनोवेशन. सबसे पहले कि व्हाट इज अ चेंज? इज इट रियली डूइंग अ टेक्निकल एडवांसमेंट, कुछ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट जो एक्चुअल में चेंज लेकर आए, जो अभी तक था नहीं कभी पास्ट में. दूसरी चीज, क्या इसकी कस्टमर वैल्यू है? इस इनोवेशन को कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करिए. डिजाइन थिंकिंग में जो फर्स्ट पॉइंट एम्पैथी की आती है कि आप उस तरह से देखिए कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें इनोवेट करना है. R&D and think tank is very important. ब्रेनस्टॉर्मिंग. उसके अलावा हमें इंक्रीमेंटल इनोवेशंस होने चाहिए. मतलब अभी सपोज एक फोन बना था काफी पहले नोकिया का, ऑब्सोलीट हो गया, बिकॉज उसके बाद काफी इनोवेशंस वन बाय वन आते जा रहे हैं, लाइफ सिंपल होती जा रही है, बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल लाइन एक्सटेंशन विच इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इनोवेशन. एंड दो बातें होती है, गेटिंग इट एंड गेटिंग इट डन. Getting it is invention, getting it done is innovation in my opinion, because whenever we get it done for some purpose, it become a innovation. दूसरी बात, sellable होना चाहिए. Unless until you generate some revenue out of a product, it is not an innovation. So कुछ points को ध्यान रखना है कि हमें commercialize करना है,
एंड कमर्शलाइज क्यों करना है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टार्टअप? टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स। डेफिनेटली हम जॉब क्रिएटर्स बनना है हमें। Job seekers are definitely, it's a good thing, we should do a job, but we should create employment for others, we should generate wealth, that is for our country only. इन्वेंशन की बात करें तो सबसे पहले एक व्हील का इन्वेंशन हुआ, उससे कार बनी, इंटरनेट बना, फेसबुक इनोवेशन है, एक साइकिल की एक व्हील बनती है, बट दिस इज अ इनोवेशन। आप देखिए कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है ईयर टू ईयर, ये ट्रांसफॉर्मेशन ही हमारी रिक्वायरमेंट है। सो अभी इंडिया क्या कर रहा है? सेकंड पोजीशन शेयर कर रहा है चाइना के साथ, मोस्ट प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के लिए एज पर केपीएमजी सर्वे 2020। और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस क्या है कि जब तक आप आईपी प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, मार्केट में आपकी सस्टेनेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में मी एंड ओनली मी, देन इन दैट केस पेटेंट इज द ओनली रेस्क्यू। So patent gives the assurance of security regarding one's innovation, creative work or a brand is mandatory, and for that we have 3 tools. कहते हैं ना वो 3 हथियार होते हैं हमारे पास। पहला पेटेंट है, दूसरा ट्रेडमार्क है और तीसरी कॉपीराइट है। अभी इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में अगर आप अपने आप एक ऑरा क्रिएट नहीं करोगे, एक बाउंड्री क्रिएट नहीं करोगे, anybody can do some reverse engineering, can make the same product after 1 or 2 years, and then आपने काफी सारे इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है, and then आपकी अगर प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है 5 years तक, then you might feel कि we are at loss. So it's important for every innovator to go for a patent, trademark and copyright. But यहाँ पॉइंट आता है कि क्या एवरी इनोवेटर, क्या सारे इनोवेशंस पेटेंटेबल होते हैं? नहीं होते। आज हम वही बात करेंगे। सो अभी हम देख लेते हैं कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट में क्या होता है। नॉर्मली ये काफी एक्सपोजर अभी लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो गुजरात में काफी कोर्सेज यहाँ पे हो चुके हैं थ्रू गवर्नमेंट एंड ऑल, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दिस अमृत मेहसाना startup mission who is really doing such an excellent work of spreading awareness about intellectual property rights, innovation, startups among school students till PhD students. That is a really big thing that is being done in Gujarat. And earlier also government of Gujarat has made so much great initiative, like I can say that every innovator today in Gujarat is well aware of intellectual property rights, but still just this slide is just a kind of ready reckoner for you. Copyright is for literary works, trademark is for brand name, slogan, logo, patent is for some novel and original work. Copyright validity is lifetime of author, after that 60 years after death. So even the progenies will be benefited. Trademark 10 years, but it can be renewed. Patent is 20 years, cannot be renewed, it expires after 20 years. Symbolic representation is C, here TM when in process, trademark, and when trademark registration is done, R symbol is there. Patent, no symbolic representation. Normally there is a seal of patented and all, that is not an official symbol. So sources, creative works, trademark is branding, patent are inventions. It is important rights when come into existence. Copyright has exclusive right over copyright, is created the moment the authorship creates the work. Suppose today I have created the work, I have fixed it on something, and I have filed the copyright. Till that, from that time, my authorship is valid. Trademark, once the trademark gets registered, applicant of the mark can claim complete right over the said mark once it is registered. Before registration, claims cannot be done. But in copyright, exclusive rights are continued. Suppose कि जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मुझे एक पोइट्री की कॉपीराइट करवानी है। आज मैंने एक पोइट्री लिखी और पोइट्री लिखकर मुझे उसे पेपर पे फिक्स करना है। जस्ट मैंने सोचा माइंड में एंड फिक्स नहीं किया कहीं पे, तो दैट इज नॉट माई कॉपीराइट। मैंने आज उसको फिक्स कर दिया, डेट डाल दी, उसे प्रॉपर प्रिंट करा के रख लिया है, उस डेट से मेरी ऑथरशिप शुरू हो जाती है। बट आई शुड हैव सम प्रूफ कि आज की डेट में मैंने ये क्रिएट किया है। सो वहां से स्टार्ट हो जाती है। बट ट्रेडमार्क में क्या है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती है तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते हो ट्रेडमार्क के लिए। बिकॉज क्या होता है, ट्रेडमार्क कभी कभी बहुत सिमिलर होते हैं। किसी की ट्रेडमार्क किसी से मैच हो सकती है, या उसमें कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, किसी को कुछ इश्यू हो सकती है।
ट्रेडमार्क में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे सपोज एक गोदरेज का मार्क है, वो साइन मार्क है, वैसे ही मैंने कोई सिग्नेचर बना दिया और दैट इज वेरी सिमिलर टू गोदरेज, समटाइम आई एम नॉट बी वेरी अवेयर अबाउट इट, तो इट हैपेंस। सो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैलिड है। रजिस्ट्रेशन में 12 से 18 महीने लगते हैं, पेटेंट रजिस्ट्रेशन 2 से 3 साल लगता है, बट आई से यू कि 6 मंथ्स में भी ग्रांट होती है अगर आप एक्सपेडाइटेड प्रोसेस से जाते हैं तो। कॉपीराइट में कोई प्रोविजनल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रेडमार्क में भी कोई प्रोविजनल रिक्वायर्ड नहीं होता है, बट एक सर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने अब आपको बताया कि बिना सर्च किए हुए अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होती है तो चांसेस है कि रिजेक्शन हो सकते हैं, बिकॉज काफी सिमिलैरिटी अगर है पास्ट में, तो दैट विल बी डिफिकल्ट थिंग। पेटेंट में प्रोविजनल एक बहुत बड़ी वेपन होती है, बिकॉज इन इंडिया देयर इज अ फर्स्ट टू फाइल सिस्टम। सो whenever an idea comes in our mind, and I'm sure that within 12 months I would be able to convert it into a product, 12 महीने में मैं प्रोडक्ट बना लूंगी, उसी दिन उस आइडिया के लिए प्रोविजनल पेटेंट फाइल कर देना है। हाँ, बट आपकी प्रोविजनल पेटेंट में एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं, कौन सी प्रोसेस से एग्जैक्ट रिजल्ट्स आएगी, और फाइनल प्रोडक्ट किस तरह का हो सकता है। सो आपको जितने भी कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं, आपको सबको सारी बड़े ब्रॉड वे में आपको एक प्रोविजनल एप्लीकेशन बनाना होता है, क्योंकि समटाइम वी आर नॉट वेरी श्योर, वी टेक द ट्रायल्स, वी टेक द स्क्रीनिंग्स, एंड फाइनली वी कम टू अ प्रोडक्ट। सो मेक अ ब्रॉड एप्लीकेशन एंड फाइल अ प्रोविजनल, एंड वंस इट इज डन, start working on it and try to complete your product within 12 months. Then you would be able to file the complete specification, and yes, the priority date would be the same on the date idea came into your mind and you filed the provisional through e-filing. E-filing mode में normally आधे से 1 घंटे में आपकी पेटेंट फाइल भी हो जाती है, so आप सेम डे भी पेटेंट फाइल कर सकते हैं जिस दिन आपके माइंड में आइडिया आती है। और उसके बाद विदिन 12 मंथ्स। हाँ, अब ये एक क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि 12 महीने में तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, मेरी तो फंड आने में भी थोड़ा टाइम लग गया, एंड दैट्स व्हाई आई कुडंट कंप्लीट इट। सो फिर उसमें सिस्टम ये होती है, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, आपके पास एक लेटर माइट भी पेटेंट ऑफिस से आ सकता है, डिम टू बी अबंडन्ड, अगर आपने फाइल नहीं करी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जस्ट 12 महीने से 1 महीने पहले आप पोस्ट डेटिंग की एप्लीकेशन डाल दीजिए और आपको और 12 मंथ्स का टाइम मिलेगा पेटेंट को कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करने के लिए। सो दैट इज अ पोस्ट डेटिंग ऑफ एप्लीकेशन। सो डेफिनेटली अभी 12 महीने नहीं चाहिए आपको, 2 मंथ्स चाहिए, 3 मंथ्स चाहिए, जब तक जितना चाहिए आप विद इन दैट टाइम यू फाइल द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड कैन प्रोटेक्ट। बट उसमें क्या होती है ना, फिर आपकी कंप्लीट फाइलिंग की डेट आपकी प्रोविजनल की डेट बन जाती है, मीन्स यू विल बी बैक बाय 12 मंथ्स, आपको वो 12 मंथ्स का लैप्स पीरियड हो जाता है और आप 12 महीने से पीछे हो जाते हैं, बट एटलीस्ट आपकी इन्वेंशन लाइव रहती है, एबंडन नहीं होती है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ अब हम देखते हैं कि इनोवेशंस को आईपीआर, पेटेंटेबिलिटी इश्यूज क्या है, आप इनोवेशंस के लिए पेटेंट फाइल कर सकते हैं, यानी कैसे इनोवेशंस की पेटेंट फाइल हो सकती है, कौन से इनोवेशंस नॉट पेटेंटेबल होते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो एक फिल्टर होता है, एक फनल होता है, उस फनल में क्या प्रॉब्लम्स होती है, एग्जैक्टली क्या है। नोवेल्टी, सबसे पहले न्यू होना चाहिए, यूटिलिटी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, नॉन ऑब्वियसनेस एंड स्टैट्यूटरी सब्जेक्ट मैटर। सो वन बाय वन हम देखते हैं ये कैसे है। तो एवरी इन्वेंशन शुड क्रॉस द नन्स टेस्ट। सबसे पहले देखिए नोवेल्टी क्या होती है। न्यू इज नोवेल्टी। न्यू व्हेन on the date of filing of patent, it should be new to the patent office. मतलब पेटेंट ऑफिस में जब हम जा रहे होते हैं उस टाइम, उसके पहले वो इन्वेंशन कहीं क्लेम नहीं होना चाहिए, नो प्रायर क्लेमिंग इन एनी पेटेंट, नो प्रायर पब्लिकेशन इन एनी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, इन एनी जर्नल्स एनीवेयर, एंड नो पब्लिक यूज। पब्लिक यूज की मीनिंग क्या है कि जैसे आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि एक इंजीनियर ने कुछ पेवमेंट्स बनाए, ठीक है, पेवमेंट बनाई और उसने कुछ जैसे टाइल्स यूज किया और वो टाइल्स की स्ट्रेंथ को असेसमेंट करना चाह रहा है। अब टाइल्स की स्ट्रेंथ का असेसमेंट कब होगा, जब उस पर लोग चलेंगे तभी पता चलेगा। तो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक पेवमेंट पर उसने अपनी टाइल्स को टेस्ट किया, उसमें हर दिन 10 लोगों ने वॉक की, एंड आफ्टर 10 days he was very sure, yes my tiles are good and this is very concrete is good, or I have made a very smart concrete,
which is totally scratchless, something उसने कुछ ऐसा बनाया. So this is not a public use. वो exempted होगा, why? Because that was for trials. ठीक है, यहाँ पे पब्लिक यूज तब होती है जब उसने पूरे टाउन में सेल कर दिया, या फिर एवरीबडी इज यूजिंग, पब्लिक इज यूजिंग इट फ्रीली, तब वहां पर पेटेंट नॉवेल नहीं रह जाता है और पेटेंट ऑफिस आपकी पेटेंट को रिजेक्ट कर सकता है. पर ट्रायल पर्पस के लिए दूसरी पॉइंट आती है. कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि एक गवर्नमेंट का एक्सपो चल रहा था, वो स्टार्टअप कॉन्क्लेव थी, और वहां पर मैंने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर दिया है, तो क्या नॉवेल्टी लॉस्ट हो गई है? क्वेश्चन इज दैट जब भी किसी गवर्नमेंट पब्लिक प्लेस में हम कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं फॉर वैलिडेशन, फॉर टेकिंग ओपिनियंस, नॉवेल्टी लॉस नहीं होती है. बट इट शुड नॉट बी अ प्राइवेट एक्सपो और प्राइवेट सेलिंग, या कहते हैं ना कि हम प्रमोशन कर रहे हैं प्राइवेटली किसी मॉल में जाके, वहां पर नॉवेल्टी लॉस हो जाएगी. बट किसी गवर्नमेंट एग्जीबिशन में नॉवेल्टी लॉस नहीं होती है, ये सेक्शन एंड एक्ट एंड लॉज में दिया हुआ है. सो कहीं पे अगर ये पेटेंट कहीं ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे एग्जामिनर ने ये इश्यू रेज किया, तो डेफिनेटली आपको सेक्शन, सब सेक्शन एंड लॉज के थ्रू ये पॉइंट को वैलिडेट कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं कि यहाँ मैंने गवर्नमेंट एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया था, दैट्स व्हाई मेरी नॉवेल्टी लॉस नहीं हुई. और सपोज आप गवर्नमेंट एग्जीबिशन में जाते हैं ना, तो फिर मेरी एक सजेशन है कि विद इन 12 मंथ्स उसकी पेटेंट फाइल कर लीजिए. सो क्या है कि कभी गवर्नमेंट एग्जीबिशन में गए भी तो भी एक क्लॉज ये भी है कि उसके 12 महीने के अंदर आपकी पेटेंट फाइल हो जानी चाहिए. उसके बाद अगर आप करेंगे तो नॉवेल्टी लूज होने के चांस हैं. सो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया है. सो मेरी क्या सजेशन है, जब भी कोई आइडिया आए तो आप प्रोविजनल पेटेंट फाइल कर लीजिए. और सपोज आपकी थीसिस के लिए पब्लिकेशन रिक्वायर्ड है, सो आफ्टर फाइलिंग प्रोविजनल पेटेंट, व्हेन यू गेट द प्रायोरिटी नंबर, then you go for publication and get it publicized anywhere. Your novelty will never be lost. So yes, first file a provisional, then you can do anything. You can publicize it, you can even go for trials. अब बात आती है इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट एंड नॉन ऑब्वियसनेस. जो नॉर्मली पेटेंट एग्जामिनेशन के बाद जो आपकी रिपोर्ट आती है, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि ऑब्वियस है, कोई भी पर्सन इसे बना लेगा. सो ऑब्वियसनेस को कैसे क्रॉस करना है? जैसे सपोज किसी ने एक कीबोर्ड बनाया और आपने कुछ ऐसा ही कीबोर्ड बनाया, बट उसमें थोड़ी सी कंफर्टेबल फीचर्स आपने ऐड कर दिए, बट ये बड़ा ऑब्वियस इन्वेंशन होगा बिकॉज आपने उस कीबोर्ड को देखकर वैसा ही बना लिया है. सो इसमें मैं आपको वो सिंपल सा, इसलिए ये एक कॉमिक है, एक लॉन्ग जंप लेना है. जो भी क्लोजेस्ट प्रायर आर्ट आपको दिखती है लिटरेचर में या फिर पेटेंट में, आपको इससे एक बहुत लॉन्ग जंप लेकर एक काफी मीन्स लाइक वेरी डिफरेंट बनाना है. आपको उसके क्लोज नहीं रहना है. टेक अ लॉन्ग लीप, ट्राई टू टेक अ लॉन्ग लीप. और अगर ऐसा लगता है आप नहीं ले सकते, तो ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ इनोवेशंस वेयर यू कांट ऐड मोर इनोवेटिव फीचर्स. यू विल बिकम वेरी ऑब्वियस एंड पेटेंट ऑफिस माइट रिजेक्ट इट. जैसे आपको बहुत सिंपल सा ऐसा बता रही हूँ कि पेटेंट में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, काफी सिंपल पेटेंट भी ग्रांट हो जाते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक मटेरियल है जिसमें हम एक हार्डर मटेरियल की जगह को रिप्लेस करना है, और हमें एक वियर रेसिस्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने कुछ हार्ड मटेरियल डाल दिया कि चलो ये इसकी वियर नहीं होगी. तो एवरीबडी नोज कि इफ यू आर एडिंग सम काइंड ऑफ स्टोन और हार्ड मटेरियल, वियर विल नॉट बी देयर. सो व्हाट इज द इनोवेशन अबाउट इट? नथिंग. If you want to improve the heat transfer and you are making it black, so definitely it is very obvious, is no kind of innovation, it's not patentable. But this coffee collar, see here, this is patented, this has generated lots of revenue in countries out of India. So this is very simple innovations that is made up of cardboard, but it was giving lots of comfort to people who were holding a very hot coffee mug. So this was an innovation because these are the disposable cups which sometimes turn very hot whenever filled with the hot coffee. So this is an innovation. This is not complex, very simple, but non-obvious. Now we come to the point where what are the innovations which are not patentable at all. So first we should have an evaluation of our own innovation before proceeding towards paying the fees and filing the patents. So first, section 3 says about the innovations which are not patentable.
So in every examination report of patent, section 3 is you can say that this is a focus. Everybody get caught in section 3 because somewhere patent office try to prove that your patent is not patentable, because they just want you to defend with your proper findings and proper facts how you can defend that yes, it is patentable. So first is that any invention which is frivolous or against the natural laws. Very simple example, inventor in 1986 in US discovered a dimple drill, because people who were not born with dimples sometimes not very happy. So this particular equipment was drilling the dimples in their cheeks, and it was very painless and harmless. You know, this such an invention, but this was rejected. Why? Because it was against the natural laws. People are should be with the like aligned with the nature, not against the nature. So this is also important. Again, method of showing time on the basis of metric system. This application was filed. This was a very unique innovation where applicant made timepiece dial having 3 arms, each of hours, minutes, and seconds, like the normal watch, but further divided into 10 parts per hours. Hours को 10 parts में divide किया गया, हर आवर को 100 मिनट में और मिनट को 100 सेकेंड्स में. बट ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई बिकॉज टाइम की मूवमेंट को शायद 60 सेकेंड्स में डिफाइन करना नेचुरल लगा पेटेंट ऑफिस को. दैट्स व्हाई दे रिजेक्टेड दिस. परपेचुअल मोशन मशीन होती है which can give output without inputs, which is against the natural laws. सेकेंड पॉइंट आता है सेक्शन 3B का. और क्या इन्वेंशन नहीं होता है? कोई भी इन्वेंशन भले चाहे वो कितना भी इनोवेटिव हो जाए, लेकिन अगर वो अगेंस्ट कॉमर्स मीन्स लाइक कंट्ररी टू पब्लिक ऑर्डर है, या फिर विच कैन क्रिएट सीरियस प्रेजुडिस टू ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ और हेल्थ और टू द एनवायरमेंट, इट इज नॉट पेटेंटेबल. जैसे कि गैम्बलिंग मशीन्स, एनीथिंग फॉर अनलॉकिंग सेल फोन. समटाइम सेल फोन गेट लॉक्ड and we wish that some innovations could be there which can unlock my cell phone, but no, this is not patentable. Any biological warfare material, anything for house breaking or lock opening, anything kind of such machines, even playing machines, gambling machines are not patentable. So we should look into account that anything should be for society, for the good of society. From the scientific point of view, terminator technology. Here what we do is like हम एक जीन इंसर्ट करते हैं जीन सीक्वेंस में, जिससे कि जर्मिनेशन स्टॉप हो जाती है, या फिर हम कुछ भी जीन ऑल्टरेशंस कर सकते हैं. इस तरह की टेक्नोलॉजी पेटेंटेबल नहीं है. सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक्स, फीमेल फेटिसाइड को बढ़ा सकता है. कोई भी चीज जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट कर सकती है और विच इज अगेंस्ट द पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी आर नॉट पेटेंटेबल. कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 3C. कहीं पे कुछ चीजें नेचर में एग्जिस्ट कर रही है और हमने उसका पता लगा लिया, दैट इज अ डिस्कवरी. सो दैट इज नॉट एन इन्वेंशन. सो व्हेनेवर वी डिस्कवर anything living or non living, or we discover a scientific principle, or we formulate abstract theory such as Archimedes principle, Einstein's theory, these are not patentable. When we discover any new gene, you know, discovery of gene is such a tedious, tremendous task, but it is not patentable because it is already there in the nature. If something is there, if we discover a new star, yes, lots of practices, lots of innovative means like practices, processes they have applied to discover a star or discover a gene. Even then, such products are not patentable. But there is a silver lining. Whenever we prepare genetically modified organisms in cell culture lab, there are a lot of human intervention. It becomes a synthetic product. It's not a natural product. Suppose recombinant DNA technology होती है और उसके थ्रू हम एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जो काफी नेचर में नहीं हो सकता ऐसा. इट्स अ टोटली मैन मेड प्रोडक्ट. जैसे कि एक बहुत लैंडमार्क केस एग्जांपल है फंक ब्रदर सीड कंपनी का. उन्होंने क्या किया था कि एक 6 स्ट्रेन, आप सबको पता होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन.
सो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं ना वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, बिकॉज उनके रूट में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं. सो उन लोगों ने क्या किया था कि 6 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियाज जो ऐसे हैं उनको आइसोलेट करके उनकी पैकेज बनाई थी सैशे में, एंड वो एक फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर रहे थे. सो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि ये सारे बैक्टीरियाज ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, या लॉट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन है बट ये ह्यूमन का बना हुआ नहीं है, ये ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा होता है. सो इन केसेस में ये प्रोडक्ट पेटेंट मार्केट में आने के बाद विड्रॉ किया गया था, एंड ये इवन पेटेंट राइट्स इसकी विड्रॉ कर ली गई एंड पेटेंट रिजेक्ट हो गया. सो ये ऐसे केसेस होते हैं कि we can't do anything with the things already existing in nature. अब ये जैसे आर्किमिडीज, सुपर कंडक्टिंग फेनोमेना, ये सब पेटेंटेबल नहीं होते, लेकिन अगर आप इसे कोई प्रोडक्ट बना देते हो देन प्रोडक्ट पेटेंटेबल हो जाता है. यही केसेस सॉफ्टवेयर के साथ भी होती है. सॉफ्टवेयर्स पर से आर नॉट पेटेंटेबल. पर से मतलब कि उनके नाम से सॉफ्टवेयर पेटेंटेबल नहीं है, बट सॉफ्टवेयर से बने हुए प्रोडक्ट्स की पेटेंटेबिलिटी हाई है. सो अगर सॉफ्टवेयर यूज करके आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया, जैसे कि आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आई एम कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सॉफ्टवेयर सेपरेटली, लेट्स प्रोसीड. सो यहाँ पे क्या होती है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट थियरी, कोई भी प्रोग्राम, रिटन थिंग्स पेटेंटेबल नहीं होते. बट सपोज अब क्या होता है कि एक सर्टेन मटेरियल है, रबर मटेरियल, जिसकी प्रॉपर्टी है मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब करने की. ये प्रॉपर्टी या ये प्रोसेस हमने डिस्कवर किया, हमने उसकी प्रोसेस को स्टडी की, कोई थियरी बनाई, दिस इज नॉट पेटेंटेबल. बट अगर उस मटेरियल से हमने एक रेलवे स्लीपर का कोच बना दिया जो शॉक एब्जॉर्ब करता है, एंड योर रेलवे ट्रैवल बिकम मींस लाइक मोर कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल. सो ये पूरा रेलवे स्लीपर कोच एक प्रोडक्ट बन जाती है, एंड देन दिस इज पेटेंटेबल. सो मेक आउट ऑफ सम थियरी and go for patenting it. New generator patentable है. Mathematical formula for the generation of electricity not patentable. Use of generator on a bicycle, you made a bicycle, that bicycle become patentable, that has used the mathematical formula for the generator. Method of manufacturing the generator is patentable because this is a process patent where you have manufactured a generator and through a novel process. So that process is patentable. So always a applied product is patentable. The process, you can say that theory, mathematical formula or scheme is not patentable. So there is a very narrow boundary in that we need to understand. अगर फार्मा या केमिकल के स्टूडेंट्स आज बैठे हैं तो उनके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेयर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ अ न्यू सब्सटेंस. जैसे सपोज एक पहले क्या होता था, सालों पहले जैसे जब पेटेंट बिल नहीं आई थी, 2005 में पेटेंट की अमेंडमेंट आई, एंड देन पेटेंट बिल बिकेम द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द फील्ड ऑफ R&D. उसके पहले क्या होता था, किसी ने क्लोरामफेनिकॉल बनाया और क्लोरामफेनिकॉल की पेटेंट एक्सपायर होने से ठीक पहले उसी कंपनी ने क्लोरामफेनिकॉल पामीटेट सॉल्ट की प्रोडक्ट बना दी, सेम का टैबलेट, एंड मार्केट में लॉन्च कर दिया, और फिर से 20 इयर्स की मोनोपोली ले ली. किसी ने उसकी पार्टिकल साइज रिड्यूस कर दी और नया प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दिया, कोई सॉल्ट, ईथर, पॉलीमॉर्फ्स बन गए. तो ये पूरी एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स हो रही थी और R&D कहीं ना कहीं रुक गया था. लोग नए प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे थे, बल्कि ये सब ऐसे मेटाबोलाइट या आइसोमर्स बना करके उस प्रोडक्ट्स की एवरग्रीनिंग कर रहे थे. 2005 अमेंडमेंट्स में ऐसा कहा गया कि ये सारे प्रोडक्ट्स सेम है अनलेस अंटिल उनकी प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी वेरी कर रही है. सपोज क्लोरामफेनिकल पामीटेट की एफिकेसी, अब क्या होता है कि बॉडी में उसका इफेक्ट, उसकी बायो अवेलेबिलिटी अगर बहुत ज्यादा वैरिड होती है, 30, 40, 50% से भी ज्यादा बढ़ जाती है, तब ये इनोवेशन है. अदरवाइज ये सब सेम है, देयर इज नो डिफरेंस. सो उसके बाद से जब ऐसी अमेंडमेंट के बाद सारे फार्मा कंपनीज, इवन और केमिकल कंपनीज, दे ट्राई टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, और उसके बाद से R&D को एक बहुत बड़ा बूम मिला इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी. सो इसके बाद से आप बोल सकते हो कि कभी भी हम ये नहीं कह सकते, जैसे सपोज एक न्यू यूज ऑफ एस्पिरिन एंड हार्ट एलिमेंट हमने निकाल लिया, एंड
एस्पिरिन को एक अलग तरीके से सेल करना शुरू किया। सो ये सब अब अलाउड नहीं है बिकॉज यहाँ पे सेक्शन 3D बहुत स्ट्रांग है एंड पेटेंट ऑफिस की मेजर ऑब्जेक्शंस केमिकल्स में, फार्मा में यहाँ पे आ जाती है। सो ट्राई टू डू समथिंग वेरी इनोवेटिव, नॉवेल, विच एक्चुअली रिक्वायर ह्यूमन इंटरवेंशन। ये सब बहुत फेमस पेटेंट के केसेस हैं जहां पर पेटेंट ऑफिस ने पेटेंट की क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया, जैसे कि गैंसिक्लोवीर। अब लोग क्या करते थे, उसके आइसोमर बना के लॉन्च करते थे, वहां पे वो सब रिजेक्ट हो जाता था। किसी की पॉलीमॉर्फ बना दी, नाम चेंज हो गया ड्रग का, एंड उसके बाद से वो और उसमें क्या होता था कि दो कंपनीज मिलके भी बहुत सारी फार्मा जायंट्स ने फाइट की है। जैसे एक कंपनी ने लॉन्च की तो दूसरे ने अपोजिशन फाइल किया, SLP डाल दी कोर्ट में। 9 years, 10 years, 13 years तो फार्मा में बहुत कॉमन होता है कोर्ट केसेस सेक्शन 3D के बाद। बट अब जब R&D हो रहा है, इवन स्टूडेंट्स भी इनोवेशंस कर रहे हैं, उस केसेस में ये चीजें हम अवॉइड करते हैं। वी ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ इनोवेशंस फॉर पेटेंटिंग बिकॉज अभी हमें पता है कि ऑब्जेक्शन आने वाला है। सो जैसे ये था, नोवार्टिस ने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 7 years तक सुप्रीम कोर्ट में केस लॉन्ग लिटिगेशन लड़ा था, उसके बाद भी रिजेक्शन हुई थी। So this is a point कि now innovation is innovation, it's not like repetition. एक और सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हम कोई मिक्सचर बनाकर उसकी पेटेंट नहीं ले सकते। जैसे कि एक एग्जांपल है पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन, कॉम्बीफ्लेम काफी लोगों ने खाया होगा। उसमें क्या होता है, पैरासीटामोल भी 500 mg है और आइबुप्रोफेन भी 250 mg और दोनों एक ही टैबलेट में है। सो व्हाट इज द इन्वेंशन? आप चाहे तो पैरासीटामोल ले लो और साथ में आइबुप्रोफेन भी खा लो या फिर एक कॉम्बीफ्लेम खा लो। देयर इज नो एनी इन्वेंशन। फिर ORS, we all have used ORS. It contains glucose, sodium chloride, sodium bicarbonate and potassium chloride का मिक्सचर। उस मिक्सचर में ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ जस्ट एडमिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स दैट इज नॉट पेटेंटेबल। तो ये सारे प्रोडक्ट्स पेटेंटेबल नहीं होते हैं। हाँ, बट सपोज कुछ ऐसा हो जाए कि दो कंपोनेंट्स को मिक्स करने से उनके डोज रिड्यूस हो जाते हैं बिकॉज उनकी कॉम्पोजिशन, उनका मिक्सचर इफेक्ट को सिनर्जाइज कर रहा है। मीन्स देयर इज अ सिनर्जिस्टिक प्रॉपर्टी। वो दोनों अगर साथ में यूज होते हैं तो बोथ आर एनहांसिंग ईच अदर्स इफेक्ट एंड दैट्स व्हाई डोज ऑफ ईच ड्रग इज रिड्यूस्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट इट हैज अ बेटर इफेक्ट इन कॉम्बिनेशन। अगर ये प्रूव हो जाता है देन product is patentable and it can generate, believe me, it can generate lots of revenue in market once get patented. Another is section 3F. Whenever we assemble something or do some arrangement or rearrangement where each of the component are working independently, then these are not patentable. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे कि अम्ब्रेला एंड टॉर्च। whenever we walk in rain, sometimes it is dark and we want that there should be some light inside, and whenever we are holding an umbrella and have like holding one bag in our hands, there is no any other hand to hold a torch with us. So an umbrella and a fan, suppose if it is there inside, and suppose we open the umbrella, then again we switch on the light, then what happens? The umbrella and the light, they are functioning independently. But suppose if we attach a sensor, when it lights the torch when umbrella is opened in rains and dark, so there is an interaction among the components, and both the components are working together to make a product which is actually umbrella and a inbuilt torch. So then such products are patentable. So बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सब मिलकर एक यूनिट इन्वेंशन को सपोर्ट करने चाहिए। वो अलग अलग काम करेंगे तो फिर ये इन्वेंशन या इनोवेशन नहीं बनेगा। सो कभी भी असेंबल्ड डिवाइस की पेटेंट नहीं ली जा सकती है। सो इफ वी एड सम कंपोनेंट, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सपोर्ट टू अदर सिस्टम, देन ओनली इट वुड बी डन। चेयर विथ अम्ब्रेला, ट्रांजिस्टर विथ कैसेट प्लेयर, ये कुछ भी पेटेंटेड नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ जब हम कंबाइन करते हैं ना तो ये सब अलग अलग अपने आप काम करते हैं। एक बहुत अच्छी सी केस स्टडी है फिगरेट एंड कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की। ये एप्लीकेशन नंबर था, काफी पुराना है। इसमें क्या था, इम्प्रूवमेंट इन और रिलेटिंग टू अम्ब्रेलास फिटेड विद कूलिंग डिवाइसेस। उसमें इन्वेंटर ने एक अम्ब्रेला डेवलप किया था जहाँ एक इलेक्ट्रिक मोटर था, एक फैन प्रोपेलर था जो उसकी शाफ्ट में फिटेड था।
अच्छी इन्वेंशन है. नॉर्मली अम्ब्रेला के अंदर काफी हॉट एयर रहती है, और अगर कोई फैन प्रोपेलर है दैट कैन कूल डाउन द एयर. बट ये भी रिजेक्ट हो गया. व्हाई? बिकॉज इट वाज सेड दैट दिस electric motor with a fan propeller and umbrella both are working independently. There is no any kind of combination or cooperation among the components. That's why, as per section 3F, it is not patentable. So we have to think something to make it something kind of inbuilt devices, so that this unity of invention must be maintained. They should not look like assembled devices. Section 3H says that any method of agriculture or horticultures are not patentable. So these are very famous scientists in Philip Fabricant. So they have produced new form of plant. Plants are not patentable. Plants are protected under Protection of Plant Variety and Farmers Act. There is a separate act. Then Virginia Carolina Chemical Corp application. What they did, this was actually very good. I have gone through their study. They have produced fertile soil with nematodes by treatment with chemicals. This was not patentable because this was considered as a method of agriculture where they were making the soil fertile with the help of nematodes. But this was not considered to be patentable that time because considered as a method of agriculture, and there was no much human intervention. Suppose if they have developed some new product, a new fertilizer, which was never there in the past, and it is not such a discovery. It is a kind of experimentation. And through experimentation, they have developed a fertilizer, and that they have validated the actual fertilization capacity of that particular mixture. It has the patenting potential. One important example is Joseph application. It's a little funny. Process of production of edible mushrooms are patentable because end product is neither animal nor plant. So if we make something which is not living, neither animal nor plant, but it is a kind of fungus. So they skipped through this particular clause. So, in laws, what is written has to be followed. In sections, there was not anything written about the anything which is not animal or plant, that is a fungus. So they got the patent rights. See how like things could be escaped from the section and rules. So mushrooms, because this is totally a natural product. Mushrooms could be grown in, but edible mushrooms sometimes are not the natural mushrooms. Edible mushrooms require a lot of human interventions because they are free from toxicity. Their method of cultivation is very different in a very man-made environment, I can say this. So that's why Patent Office has considered this edible mushrooms patent application and got it patented. Section 3I, this is again one example when any process of medicinal, surgical, curative, prophylactic, diagnostic, therapeutic or any treatment of human beings. मतलब डॉक्टर्स की दुकान बंद हो गई. डॉक्टर्स के सारे मेथड जो होते हैं मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, ये सारे पेटेंटेबल नहीं होते बिकॉज सपोज अगर कोई मेथड ऑफ सर्जरी पेटेंट हो जाए तो ये कितनी कॉस्टली हो जाएगी. सो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड. सो इनकी इतनी पायस सर्विसेज इतनी होती है कि लाइक दे आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सो कोई भी मेडिसिनल मेथड्स नॉट पेटेंटेबल होते हैं. कोई कैंसर ट्यूमर का रिमूवल का मेथड, डेंटल प्लेग की रिमूवल, कैरीज की रिमूवल का मेथड, ये सारे पेटेंटेबल नहीं होते हैं. बट यहाँ पर सबसे ज्यादा पेटेंटेबिलिटी किसकी होती है? मेडिकल डिवाइसेस की. सीजर्स, एनी काइंड ऑफ गुड सीजर्स और एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू मेडिकल डिवाइस आर पेटेंटेबल. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पे. सर्जिकल, थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक apparatus और इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑलवेज पेटेंटेबल. These have the patentability, and this is a very simple example of a bunny syringe where normally children are very afraid of getting vaccinated because of that syringe, and whenever they approach to them, they normally cry. So innovator in US has innovated a bunny syringe. They have attached the shape of a bunny toy at the tip of the needle, and whenever this bunny syringe approaches the kid during vaccination, the kid laughs, and whenever it pricks on the skin of the kids again laughs. Why? Because bunny is biting them.
So it was a kind of a unique innovation. It is generating lots of revenues nowadays, but it's such a simple thing. I can say patent doesn't mean any complex innovation. It is such a simple innovation. But yes, medical devices field is open to everybody. They can do a lot of innovations in medical devices, and yeah, this field is also with lots of revenue generations. Lee Pharmaceutical application has they are sealing the pits and fissures on the grinding surface of teeth to prevent the onset of dental decay. The purpose of the treatment was therapeutic rather than cosmetic, hence not patentable. So where is the silver lining? कहाँ पे है? कोई cosmetic method patentable है? बहुत सिंपल है. Medicinal, surgical, curative, prophylactic and diagnostic methods are not patentable, but cosmetic surgeries are patentable because it is not there in the section. So this is a very remarkable point of view that we have to read between the lines of the section and acts. Plants and animals in whole or any part of them are not patentable. Microorganisms are not patentable because these are the discovery of nature. But a very important case, I can say that this is the landmark case of Monsanto Bayer. Guys, they have discovered a ball guard 2 BT cotton through a lot of human intervention, and the seeds were genetically modified. These seeds were producing the cotton which is very superior in quality. But earlier, the patent was rejected by patent office. Appeal went to High Court. Again, lot of litigation went on, but then they got relief to biotech sector by Supreme Court, where the ball guard 2 BT cotton got the patent rights. So whenever we do any genetic modification in some kind of product, cotton seeds, or genetically recombinant technology such as a dolly shape, or anything which is not in nature but made by human intervention in a man-made environment, not in natural environment. So man-made means cell culture, tissue culture, or recombinant DNA technology. Whenever we do it, then definitely it has the patentability part. Otherwise, normally these microorganisms, plant and animals per se are not patentable. Section 3J, again, there are some more examples where we can say that method of improving the milk of cow and cow itself rejected because again the live organisms were being claimed. Section 3K, this is also important. Mathematical or business method or computer programs per se or algorithms are not patentable. But if we can make some applicable product, it becomes patentable. So Google has filed patent application in Kolkata Patent Office. Use of computer program to develop computing devices, yes, patentable. Oracle filed again in Kolkata Patent Office. Method of preparing compended blocks using algorithms, yes, it got patented. So if an algorithm for applied use for data compression in banks, telecom, education are patentable. 2G, 3G, 4G, yes, voice is being compressed for effective transmission using algorithms. It has lots of patentability. So important is that don't let your software or algorithms to be as such, go for copywriting it. After copywriting your software and algorithms, make an applicable product out of it and go for patenting the product. So these are the remedies. Any literary, dramatic, artistic works are not patentable but copyrightable. And even the charges of copyrights are very less. So I think whenever you write a poetry, write a book, or write a good standard operating procedure for equipment that is very creative, never done in the past, go for copywriting it. One more thing is like any mere scheme of playing games, rule of cricket, football, method of playing games are not patentable. These are the section, these are the rules. There are a lot of amendments also goes on in Indian Patent Act and rules. Sometimes it is becoming more welcoming for innovators in all sectors. So every time might be there in future some method of playing game may be patentable, but currently these are not patentable. Presentation of informations are not patentable, but yes, if it is a very creative presentation, you can go for copywriting it. And section 3K says about topography of integrated circuits are not patentable, but there is a separate act, Semiconductor Protection Act, through
your semiconductor or integrated circuits can have some rights. Section 3P says that any traditional knowledge or aggregation of properties or duplication of properties are not patent. I can say it, like suppose a Chyawanprash is made using the paste of already existing products in market. We have not done any innovation. Suppose I have taken a lot of herbal products which is known since ancient years that for their properties, and I have made a paste of them and selling them. So these are not patentable. What we can do, suppose there is a turmeric cream and I have made a turmeric cream that is not staining on the skin and it is permeating the skin to deep inside to treat my infection of fungus. So that is patentable because there are a lot of human intervention. I have made some nanoparticles. I have made some, added some penetration enhancers. I have made some kind of novel gels to permeate my drug inside. So these become the patentable inventions. But normal, just making a paste, suppose Chyawanprash, or you can say that any of the Ayurveda products which is just made by making a mixture, these are not patentable. Section 4 says about anything related to atomic energy which is not patentable but protected under Atomic Energy Act 1962. So this is all about patents that could be they have the patent criterias or innovations which cannot be patented. If you have any questions, I'm very happy to answer your questions because I can't cover all innovations here in terms of not patentability. But yes, I can answer your questions individually. If you have any questions, definitely you can ask me freely. Very informative session, ma'am. Very informative session. Thank you. Thank you so much. Students, principals who are here, you guys can ask the question. You can drop your questions in the chat box. Ma'am, I'm very curious about this topic and I have a question. Yes. मैम हम बोलते हैं कि वो बिस्लरी की बॉटल के शेप का उन्होंने कुछ पेटेंट या कुछ ट्रेडमार्क कुछ लिया हुआ है जो वैसे टाइप के शेप की बॉटल कोई और वाटर बॉटल पैकेजिंग नहीं कर सकता है. मैम व्हाट इज दैट? हमने तो ऐसा सुना है कि 10 साल के बाद पेटेंट मतलब वैलिड नहीं रहता है. इट्स आउट इन द पब्लिक कैन यूज और समथिंग. सो लाइक व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इट इज? ओके मैम, पेटेंट की लाइफ 20 इयर्स तक होती है और पेटेंट के लिए इनोवेशन होना इम्पोर्टेंट है. अभी शेप की बात करते हैं तो शेप के लिए हम ट्रेडमार्क ले सकते हैं. जैसे कोका कोला की बॉटल, उसकी ऑलरेडी है ट्रेडमार्क. वो उस तरह की बॉटल कोई और नहीं यूज कर सकता है एंड उसकी वैलिडिटी 10 इयर्स की होती है. बट 10 इयर्स के बाद रिन्यूअल की भी पॉसिबिलिटी है. तो सपोज कोका कोला ने उसको रिन्यू करा लिया तो फिर कोई और, मीन्स लाइक इट्स अ काइंड ऑफ एवरग्रीनिंग. दे कैन रिन्यू इट आफ्टर एवरी 10 इयर्स. तो वो शेप मार्क ट्रेडमार्क बन जाता है. शेप मार्क होती है, इवन यूएस में स्मेल मार्क है, साउंड मार्क्स हैं. So yes ma'am, I was even curious about that. Like, is there any example about smell marks? I actually didn't understand actually, what is this. यूएस में है, यूएस में ऐसा है कि सीविंग थ्रेड्स होती है ना, सीविंग थ्रेड्स में एक पर्टिकुलर स्मेल है एक कंपनी की और उससे जब शिविंग थ्रेड से क्लोथ्स में वो आप शिविंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर ब्रांड होती है. एक्चुअली ट्रेडमार्क हम ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए करते हैं कि उस पर्टिकुलर स्मेल की थ्रेड कोई और यूज नहीं कर सकता है. या फिर आपकी जैसे होती है ना मूवीज में कहीं कहीं पे आप देखोगे एक पर्टिकुलर साउंड के साथ वो शुरू होता है, रोरिंग ऑफ अ लायन इन हॉलीवुड मूवीज. सो वो सब साउंड मार्क्स हो जाते हैं. फिर शेप मार्क होती है, एडिडास की एक शेप होती है, जैसे नाइकी का भी एक शेप है. तो ये सब ट्रेड मार्क्स होते हैं. मैम मैं यानी आपने ये बताया स्मेल का, तो is it, I am asked, like giving an example, you can correct me if I'm wrong. Ma'am, I'm very addicted to this products of M caffeine. Okay. Okay, so they have this particular smell of coffee. So Yes. is it like they can even apply for the trade for that? Yes. It can be exploited, but in India, actually, smell mark is not so prevalent. It's not valid. In US, it is there because normally people get attracted to certain kind of smell, so it should be included as a trademark. Okay, ma'am, does even perfume brands, go for the smell trademark or something? Normally, smell mark is not, because smell can't be fixed.
Smell Yes. can't be fixed. That's why that's a problem here. But yes, Yes. it can be there. In US, it is there. Other countries. There is question by Khushi. If I make one cosmetic product from different way, so it is patentable. So Khushi, can you please elaborate in what different form or what different way are you gonna make it? Or is it you are that Khushi who was there in that student startup meet and was talking about some biodegradable product making of like cosmetics? Is it, if I am right? So there was a student who was working on this project जो Okay. बायोडिग्रेडेबल कॉस्मेटिक्स बनाना चाहते थे मतलब yes 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 so here you are Kushi, why are you not contacting us? Email us, come meet us, we will discuss this. Okay. So ma'am, she is working on this something biodegradable, so is it she can go for patent because right now they are on the research stage? Okay. Yes, 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 definitely. Definitely, if it is a biodegradable cosmetic product, you should go definitely for the patent. Even your licensing process is easy for cosmetic products as compared to the normal pharma products. And before, I think I suggest you that before going to exhibitions and telling about your product, you must have your provisional patent filed and get the priority number of the patent first of all. And yeah, she is not sharing anything with us. That is what. We are so here to help you, Kushi. We are not taking away your idea. You can trust us. We will connect definitely, and with you with the people. Yes. yes, yes. Even student startup and innovation policy has like a provision of like all the charges reimbursement for the Yes. patent filing. Even Kapila, Ministry of Education, has that kind of facility. So now it's very easy to do, and there are a lot of facilitator in Gujarat also who can help you. Yeah, yeah, yeah. So I think that's all for today. We don't have any much questions left, or yes, we don't have any other questions. So as usual, I would like to tell you people, कोई भी कांटेक्ट करना है हम लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो www.amritmehsana.com पे। आप ईमेल कर सकते हो amritmehsana@gmail.com पे। आप हमको फेसबुक इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। अब हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए है, आप उधर से भी टेक्स्ट कॉल कर सकते हो। वेबसाइट पे हमारा नंबर भी अब लाइव है, आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। ये सब भी नहीं होता है, कलेक्टर ऑफिस में डायरेक्ट आ जाइए, हम मिलके बात करेंगे। खुशी आपके लिए तो स्पेसिफिकली उस दिन भी कहा था कि आप आइए यहाँ पर बैठ के बात करेंगे। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हम आपकी हेल्प करेंगे। और आपके लिए ये सारे सेशंस हम अरेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं। मैम 2007 से इंडस्ट्री में है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस है मैम को। तो आपको जो भी चीजों के क्वेश्चंस है, सॉल्यूशंस चाहिए, ईमेल करिए, कॉल करिए। ईमेल करते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिए तो हम आपसे कॉल पे बात कर पाए। और भी जो भी डाउट्स है हम आने वाले सेशंस में क्लियर करते रहेंगे। कल फिर से 4 बजे यहीं पे मिलेंगे जूम पर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो इन द सेम सेशन। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक Thank यू you. सो मच मैम। Thank you so much, ma'am. It's a great initiative by Amrit Mehsana Startup and Innovation Mission.